सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं चल रहा हूँ बाबा महाकाल जी के यहाँ पर मतंगेश्वर मंदिर में। और पहले हम यहाँ से चलेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद हम खजुराहो जाएंगे, वहाँ पर मतंगेश्वर भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और फिर मैं वहाँ से उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने चलूँगा। तो गाइस, पूरी जर्नी में आपको दिखाऊंगा बीच बीच में कैसे कैसे क्या क्या होगा और कैसे हम वहाँ पर पहुँचेंगे, सारी चीज़ दिखाऊंगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ इस ब्लॉग के अंदर। तो चलते हैं, फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, ये मेरी रेल आ चुकी है और मैं इससे जा रहा हूँ खजुराहो मतंगेश्वर मंदिर में। मेरे पापा भी हैं साथ में मेरे। अभी मैं 13 घंटा की जर्नी करने के बाद मैं खजुराहो पे पहुंच चुका हूं और अभी आगे चल के मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं क्या क्या होने वाला है। तो चलिए बने रहिएगा अभी ब्लॉग के अंदर। तो मिलते थोड़ी देर। तो गाइस, हम आए थे इस गाड़ी के अंदर। ये देखो लिखा हुआ खजुराहो कुरुक्षेत्र से गाड़ी बन के चली थी। तो आ गया हूँ मैं मतंगेश्वर भोलेनाथ जी के मंदिर। यहाँ खड़ो हो जाऊँ। तो गाइस, मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। आज लिखा हुआ ऊपर श्री श्री 1008 श्री मतंगेश्वर मंदिर द्वार।
हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं मातंगेश्वर मंदिर में पूरे राज्य से मिलने के लिए। और मैं अपने पापा को दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी अभी मैंने दर्शन कर लिए। इतना बढ़िया मज़ा आ रहा है ना बाबा जी के दर्शन करने में, क्योंकि मैंने 4 महीने से इंतज़ार करा है इस दर्शन के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको पापा। ये देख लो श्रीमान जी, फांस के कपड़े।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:20। तो अभी हमने पूरा खजुराहो दरअसल कंप्लीट कर चुके हैं। बस थोड़ी सी जगह रह रही है जहाँ पर हमें जाना रह रहा है। तो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको